Hi guys, welcome to Hamid's Fun Learning Hub. So in this video हम लोग डिस्कस करेंगे about कैपिटल गेन के बारे में, ओके, कैपिटल गेन टैक्स के बारे में. सो बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्स का चेंजेस आया था, ओके, जिसका इफेक्ट होगा इस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर जो हम लोग आईटी रिटर्न फाइल करेंगे कुछ ही दिन में. Okay, that means financial year 24-25 and assessment year 25-26. क्योंकि ये जो changes आया बजट 2024 का जो changes आया था from 23rd जुलाई 24. ओके, सो कैपिटल गेन अगर आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, देन आपका अगर आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सपोज आपका फर्स्ट अप्रैल से 23rd जुलाई तक एक कैपिटल गेन का रेट होगा. 23rd जुलाई के बाद अप टू 31st मार्च 25 तक और एक कैपिटल गेन का रेट एप्लीकेबल होगा. ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट गाइस. So welcome to this comprehensive analysis of the capital gain tax changes introduced in budget 2024. This amendment effective from 23rd July 24. Okay, represent significant shifts in how investment returns are taxed across various asset classes. So बजट 2024 में जो चेंजेस आया था ये 23rd जुलाई 24 से इफेक्टिव हुआ था. ओके, सो कैपिटल गेन टैक्स चेंजेस फॉर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के बारे में फर्स्ट डिस्कस करेंगे. एक टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड एक है बिफोर बजट 24, दैट मीन्स अप टू 23rd जुलाई 24, एंड सेकेंड आफ्टर बजट 24, दैट मीन्स आफ्टर 23rd जुलाई 24. ओके, सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में फर्स्ट डिस्कस करेंगे. सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अप टू 23rd जुलाई 24 तक आपको 15% था टैक्स का रेट, ओके, अंडर सेक्शन 111A. एंड 23rd जुलाई 24 के बाद ये हो गया है 20%. ओके, सो आपको अप टू 23rd जुलाई 24 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो रेट है 15% था, एंड आफ्टर 23rd जुलाई 24 हो गया 20%. ओके, सो ये दो रेट एप्लीकेबल होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक है अप टू 23rd जुलाई 24. सो इफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड्स 1 लाख, 1 लाख का ऊपर जो एक्सेस अमाउंट है उसका ऊपर आपको 10% LTCG देना पड़ता थे अंडर सेक्शन 112A. ओके, एंड आफ्टर 23rd जुलाई 24 if your total LTCG exceeds 1,25,000 then you have to pay LTCG 12.5%. ओके, सो आपका up to 23rd July 24, up to 1 lakh you don't need to pay any LTCG, and after 23rd July 24 up to 1,25,000 you don't need to any LTCG. उसके बाद आपको 12% रेट में टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके, so new tax regime increases the STCG rate from 15 to 20%, representing a 33% increase in tax liability for short-term capital traders. Okay, meanwhile LTCG rates have risen from 10 to 12.5% through, though with a slightly increased exemption limit of 1.25 lakhs. For example, Mr. A, who sold listed equity shares earning 3 lakhs as LTCG in financial year 24-25. So under the new rules, कितना आपको LTCG पे करना पड़ेगा? So up to 1,25,000 तक नील. So 3 lakhs minus 1,25,000, that means 1,75,000 जो LTCG है इसका ऊपर आपको टैक्स होगा 12.5%. ओके, which is 21,875. ओके, सो टैक्स लायबिलिटी आपको कितना होगा ऑन 3 lakhs LTCG? 21,875. इम्पैक्ट ऑन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स. सो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हम लोग देख लिया. नाउ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स. सो बजट बिफोर बजट 2024 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है एज पर स्लैब रेट होगा.
आफ्टर बजट 2024 के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कोई चेंजेस नहीं है, सेम स्लैब रेट आपको यूज होगा फॉर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। एलटीसीजी के लिए 20% था विद इंडेक्सेशन प्रॉफिट, एंड नाउ आफ्टर बजट 2024 हो गया 12.5% without indexation. Okay, so investors could reduce taxable gains by adjusting the inflation using the cost inflation index, but after budget 2024 indexation कोई indexation नहीं रहेगा, तो simpler calculation but removes the inflation adjustment benefit that previously reduced the tax burden. For example, Mr. B sold unlisted shares after 3 years earning 4 lakhs. Okay, so LTCG is 4 lakhs, so as per new rules 12.5% आपका tax होगा on 4 lakhs which is 50,000. ओके, सो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए कोई एग्जामेशन नहीं है, जैसे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए अप टू ₹1,25,000 है। ओके, बट इसके लिए टोटल जो एलटीसीजी इसका ऊपर 12.5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विदाउट इंडेक्सेशन। ओके, नेक्स्ट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स विद एसटीटी पेड, जिसका एसटीटी पेड होता है म्यूचुअल फंड के ऊपर। So understand the rate change. STCG rates have increased from 15% to 20%, while LTCG rates have risen from 10 to 12.5% on gains exceeding 1.25 lakhs threshold. Okay. So now calculate your taxable gain, determine your total capital gain, then subtract exemption 1,25,000, बैलेंस जो होगा उसके ऊपर आपको LTCG का रेट अप्लाई होगा। ठीक है, so multiply your taxable gain by appropriate rate, which is 20% on STCG and 12.5% on LTCG to determine your tax liability. For example, Mr. C who won 2,50,000 as LTCG from equity mutual fund, after applying the exemption of 1,25,000, जो बैलेंस 1,25,000 उसके ऊपर आपको 12.5% ऐड होगा। ओके, देन आपका 15,625 LTCG का ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड विदाउट एसटीटी पेमेंट। सो प्रीवियस LTCG का जो रेट था विद इंडेक्सेशन 20%। ठीक है, न्यू LTCG जो रेट है फ्लैट रेट विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, and change to STCG, short-term capital gain, continue to be taxed as per income tax slab rate. Okay, so STCG के लिए आपको slab rate use होगा, but LTCG के लिए 20% था previous rate, अब हो गया 12.5%. For example, Mr. D overseas mutual fund, no STT paid, realizing LTCG 3 lakhs. Under the new regime, his tax liability would be 3 lakhs का ऊपर 12.5%, which is 37,500. Okay, so it could have used indexation to reduce that taxable gain substantially, especially for investment held over many years. ओके गाइस, तो ये था कैपिटल गेन का चेंजेस। सो इस फाइनेंशियल ईयर का 2 रेट अप्लाई होगा अप टू 23 जुलाई 24 एक रेट, एंड आफ्टर 24 जुलाई 24 से कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। ओके गाइस, सो होप यू अंडरस्टूड।